between the terrorists and the world. And Pakistan needs to be strengthened in this situation. Pakistan needs to be supported in this situation. And Pakistan has always played its part against terrorist groups, against terrorists, and we continue to do so on a daily basis. And I would like to highlight that the situation in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan, and recently you all witnessed the Jafar Express episode, which was an unusual event, which was an event where a hijacking took place. Very few incidents in the world like Jafar Express have taken place. It was a hostage situation like never before. And having dealt with that situation, having countered the terrorists who were holding hostage innocent civilians, we received condemnation from all over the world. Why is it that our eastern neighbor refrained from condemning the Jafar Express episode? It was an act of terror. It was an act carried out by terrorists. It was an act against innocent civilians and personnel of the armed forces. Then why was there hesitation on part of our eastern neighbor to issue a simple statement of condemnation condemning that episode? And why is it that whenever we face terrorism and we counter terrorists and blood is spilt of our innocent civilians and officers and personnel of the armed forces, why is it that the eastern neighbor always celebrates these events? Is there a reason behind that? Yes, there is a reason behind that. And the reason is that India is involved in state-sponsored terrorism. Had we not apprehended Kulbhushan Yadav, who was a commissioned officer of the Indian Navy and was involved in espionage in Pakistan and was found to have been involved in terrorist activities and harboring and supporting terrorists and acts of terror, had we not apprehended Kulbhushan Yadav, had we not obtained incriminating and irrefutable evidence against him, I would not have been making this argument today. And why is it that the terrorists which receive funding and arms and ammunition from our eastern border, that is why when terrorist attacks take place, when acts of terror take place, like the Jafar Express episode, that is why the eastern neighbor does not condemn such acts and does not even have the courtesy to express concern over these incidents. And I would further substantiate my argument through the assassinations of Sikh leaders across the world in Canada and US. Transnational assassinations are taking place through the Indian-sponsored state terrorism. A state which persecutes and is involved in killing of members of the minorities across the globe, and other states have given evidence with regard to these incidents. So we will continue to fight the war against terrorism. We will continue to protect the world, the citizens of the world. We will continue to promote global peace and to ensure global peace through countering these terrorists, the Fitna al-Khawarij, which is trying to impose their own ideology in certain areas and is trying to, through acts of violence, through use of force, trying to spill blood of innocent civilians and of army personnel. We will continue to fight this war. This Pahalgam episode, to me, seems like a distraction because we were gaining a lot of success in our western regions.
against these terrorists. Every other day, you hear of successful operations, you hear of our armed forces gaining a lot of success against these terrorists. And this could have been a distraction because this story doesn't make sense. The Pahalgam area is more than 150 kilometers away from the line of control. And why pin the blame on Pakistan? Do you have credible evidence? Do you have verifiable evidence? Do you have any argument which is substantiated by evidence or by proof? And why is it that the first information report, which is a prerequisite for any criminal investigation, it was registered in the Pahalgam police station just 10 minutes after the incident? Is it possible for any investigating agency to register a first information report, an FIR, 10 minutes after an incident has taken place? Because for an FIR to be lodged, there has to be visit of the area, evidence needs to be collected, there has to be a complete scanning of the area, forensics take place, and there is usually a time lag between the occurrence and the registration of an FIR. So why is it that right after 10 minutes an FIR is registered and the blame is put on Pakistan, and it is said that it has been sponsored from across the border? The reason that we have called for an independent, impartial and transparent inquiry is because our hands are clean. How can a state which is the frontline state in the war against terrorism be responsible for such events? So I think our eastern neighbor was quick to jump to conclusions. And this false FIR episode actually proves my point that somehow they had preconceived notions about this incident. And maybe the purpose was to pin the blame on Pakistan. And Pakistan being a responsible state, Pakistan being a peaceful state, Pakistan being desirous of world peace, we've had very good relations with all other neighbors. We have very good alliances globally. We're a responsible member of the UN Security Council. And let me also reiterate that Pakistan has got majority of votes when it got elected as a non-permanent member of the UN Security Council. We received an overwhelming majority of votes to be elected to that position. And why is it that the Indian state-sponsored terrorism, we have credible evidence of India's involvement in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa, in harboring, funding these terrorists, in supporting these terrorists, and their extremist ideology through which they are encouraging their people to attack our foreign missions? A very unfortunate incident took place in London. Our High Commission was attacked twice. Stones were pelted. And the people who are responsible are being sponsored by the Indian state and the Indian agencies. And it's very easy to counter a handful of people. But we are peaceful people. But whatever they did, and arrests were made by the London Metropolitan Police, those people have been apprehended. But that is the kind of mindset that the Indian state has of attacking foreign missions in a foreign country. If you can kill people internationally in Canada and US, then nothing will stop you from attacking a few foreign missions. But let me reiterate, they shouldn't at all mistake our words for our weakness. Pakistan has always defended itself. Pakistan will always defend itself. Pakistan has the capacity to respond effectively, like we did in the aftermath of the Pulwama incident, in the aftermath of the Pahalgam. And we are good hosts, so we also served a very fantastic cup of tea on the way out. So
My point is that Pakistan has the capacity and the capability of defending itself very well. And we've been tested in the past, and let me tell you, ladies and gentlemen, we've passed with flying colors. And our enemy has always regretted taking the steps that it did take in the past. So we are capable, we are ready to counter any misadventure with full force and might. But why is it that India sponsors terrorism and then plays a victim of terrorism? How is it possible? Have we not laid down 90,000 lives in this war on terror? Are we still not giving sacrifices every single day? Is the state of Pakistan not going out of its way to eradicate terrorism, not only in Pakistan, but for the sake of world peace? Yes, we are. Then how come an incident takes place after which a few videos were shared? Now my question is, there are voices of dissent within India. People are asking questions from the Modi government that how come these dead bodies were not picked up on time, and how come people were led to bleed to death on the spot. I was seeing an interview of one of the sisters of one of the victims, and she said that my brother was not given first aid after the incident. And why is it that a photo shoot takes place and nobody is actually coming to the aid of that man to check his vital signs if he's still alive? And then how come a video of a couple was shared which was attributed to the naval officer who's been killed in this incident, and then that couple actually came on the media and said, this is us, this is not that couple which has suffered in this incident. So why is there a need to use all these measures? So anyone with some intellect can actually see that all these fake videos which are being flooded on social media, all this narrative that is being built, it is being built on very false premise. And the actual target to divert Pakistan's attention from the western region. And I think, like in the aftermath of Pulwama, they took away Kashmir's special status. Now people in Kashmir have been settled there since times immemorial. The indigenous people of Kashmir are being made to suffer the wrath of the Indian state. Houses are being demolished. People are being picked up and detained. Women and children are being subjected to torture. In the garb of this incident, the innocent Kashmiris are suffering once again. And we will and we shall continue to support the right of the Kashmiri people according to the UN resolutions to self-determination. Morally, politically, diplomatically, we shall continue to do so. Because that is an indigenous movement. The people want their rights. They are being denied their fundamental rights. And right after this incident, the atrocities that are taking place in Kashmir, they're the worst kind of atrocities that you can imagine. So one ponders that why is it that right after this incident, you build up a narrative against the Kashmiri people, you try to distract Pakistan from its western borders and from its western region, and you're subjecting the Kashmiris to the worst kind of treatment possible. And why wasn't security provided in that area when you have 900,000 security personnel of your armed forces in Kashmir? Then why was there no deployment in Pahalgam being a tourist spot? In my own right, I want to ask this question. You can deploy 900,000 security personnel in Kashmir to subjugate the Kashmiri people, but you can't provide security for your own people in that region. And without proof, you pin the blame on Pakistan. Why shouldn't the blame be pinned on you, is my question. It seems to me that this whole episode was done for one of the most valuable resources these days, and that is water. Climate change has affected the world. And let me tell you, sitting in Pakistan, we contribute less than 1%
of carbon emissions globally. And when it comes to suffering the consequences of climate change, we are one of the worst affected countries in the world. We've seen floods in the recent past, 2 years back. I personally seen the flood of 2010, which wreaked havoc. Billions of dollars of loss occurred. Thousands of lives were lost, livelihood, houses. So, water is an issue, climate change is an issue. And to say that we will suspend the Indus Water Treaty seems to me as an immature and a very childish step. Because I, being a student of law, I've studied some public international law. And I've also studied the law of treaties. What does the law of treaties tell you? What does the law, public international law tell you? That when there are two parties in a treaty and they agree with mutual consent and they come to common terms and they sign a certain treaty, then that treaty cannot be revoked, suspended or terminated unilaterally. It has to be done with mutual consent. And I was just reading an article by an Indian journalist. I would not like to name him because he's obsessed with Pakistan, tweets 20 times a day. And he has actually criticized his own government and said that the Modi government could not have done this. And Pakistan is an agrarian economy. You very well know that. Agriculture is the backbone of our economy, our exports. And I think this has been done to affect Pakistan's economy and the livelihood of its people, because majority of our people reside in the rural areas. And their livelihood is dependent upon their crop, upon their livestock. This is very unfortunate that you would attempt to suspend a treaty, the right of which you don't have. You don't have the right to suspend that treaty. This was something which has been done prematurely, without consulting legal experts, without actually reading the treaty, which actually has a clause which says that this cannot be done unilaterally. So if you want to usurp Pakistan's water, you don't have that right legally. You don't have that right as per the international best practices, the international law, the law of treaties. You can't do that. This has been seen as an act of usurpation. This has been seen as an unfair and unjust measure. And when the National Security Committee met, and the Prime Minister also made it very clear that any attempt to divert or stop Pakistan's water will be responded to with full force and full might. And the National Security Committee has already said that this will be an act of war. So I think in this whole episode, where Pakistan has acted very responsibly as a member state of the United Nations, as a state which believes in peace, as a state which is the frontline state against the war on terror, and to take a step like this against Pakistan to stop its water, which cannot be done. तारार मीडिया से गुफ्तगू कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत के अंदर से पहलगाम वाकये के हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। Intelligence. Awesome screen, awesome camera, awesome. Intelligence. Awesome camera. Awesome. Intelligence is for everyone. क्राउन सोलर के पैनल्स, बैटरीज, इन्वर्टर्स लंबे अरसे तक चले और बेहतरीन एफिशिएंसी दें। क्राउन सोलर। कैल्शियम और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग्लूको की स्पेशल ऑफर। अब 20 रुपए में मिले 2 एक्स्ट्रा बिस्किट और 10 रुपए में मिले 1 एक्स्ट्रा बिस्किट। ज्यादा बिस्किट, ज्यादा एनर्जी। पाक फैन पेश करता है पाकिस्तान का पहला ऐप कंट्रोल्ड BLDC फैन। पाक फैन, जिद्दत आपके हाथ में।
slow melting, smooth coating, long lasting. It could only be Cadbury Dairy Milk. मेरा नाम कश्यप है और मैं गुजरांवाला से हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही गुजरांवाला की रहने वाली हूँ और ये खाने पीने के हवाले से बहुत ही मशहूर है। आप यहाँ के लोगों से पूछ लें आप कहाँ से आए हैं, हम कैसे खाना खा के आए, तो कितने जा रहे हो, खाना खान जा रहे हैं। ये ना भूख लगी रहती है। पहले भी और मसाले यूज करती थी, लेकिन वो अपने घर पे किराना शॉप स्टोर्स हैं, यहाँ से शॉपिंग करते ब्रांड एम्बेसडर्स खड़ी होती हूँ। तो वहाँ मुझे एक ब्रांड एम्बेसडर ने शान मसाला के मसाले लिए और जब से मैंने इसके शान मसाला जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, इससे मेरा काम बहुत आसान है। खानदान में बिरयानी के हवाले से बहुत मशहूर, तो वो मैं हर 2 दिन छोड़ के बिरयानी बनाती भी रहती। फिर ससुर तारीफ करते हैं, मेरी रेसिपी देते हैं मुझे खाना बनाने के बाद, सास भी करती हैं और हस्बैंड तो बहुत ज्यादा। बिरयानी देख के दिल करने लग जाता है जो शान से बनी हो। कैल्शियम और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग्लूको की स्पेशल ऑफर। अब 20 रुपए में मिले 2 एक्स्ट्रा बिस्किट और 10 रुपए में मिले 1 एक्स्ट्रा बिस्किट। ज्यादा बिस्किट, ज्यादा एनर्जी। वाह, ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। सर्विस टायर, पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड। टीक फील्स केक अप के फ्लेवर्स में भरा है गुडनेस का मजा। टीक फील्स केक अप अब सिर्फ 20 रुपए में। Big on fizz, big on refreshment by Murray Brewery. Extra chips. Extra chips. Raise ₹30 or ₹50 pack with 25% extra chips. Extra chips. Extra joy. कैल्शियम और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग्लूको की स्पेशल ऑफर। अब 20 रुपए में मिले 2 एक्स्ट्रा बिस्किट और 10 रुपए में मिले 1 एक्स्ट्रा बिस्किट। ज्यादा बिस्किट, ज्यादा एनर्जी। कोलगेट मैक्स फ्रेश, नींद भगाओ, ताजगी जगाओ। आज फिर से लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का तो अपनी चॉइस का होना चाहिए। तो तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? मुझे अंदाज हो उसका अपबीट, कभी प्लेफुल, कभी स्वीट, मोमेंट में ऐड करे, स्मूथ सी वाइब। रॉकिंग हो स्टाइल मगर दिल का हो सॉफ्ट टाइप। एक्सक्यूज मी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? अगर उमोर है तो क्यों नहीं। जब उमोर से मिले इतना फ्लेवरफुल बाइट तो खुल के दिखे हर मोमेंट की वाव भरी साइड। Berger Weather Pro, durable exterior emulsion, UV resistant, color lock technology. Berger Weather Pro works like a pro. इस उम्र में बच्चों को एक्टिव रहने के लिए बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है प्रोबायोटिक्स और खास न्यूट्रिएंट्स बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। नेस्ले लैक्टो ग्रो एक्टिव विद एक्टिव ग्रो। मंथली एक्सट्रीम प्लस से 1500 रुपए में मिले 60 GB डेटा, 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स। रूफ मास्टर, जो छतों की हीट और वाटरप्रूफिंग के लिए एक बेहतरीन इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। पिछले 25 साल से क्राउन ग्रुप मेहनत, मेयार और एतमाद का निशान बना हुआ है। इनके सोलर पैनल्स, बैटरीज, इन्वर्टर्स लंबे अरसे तक चले और बेहतरीन एफिशिएंसी दे। क्राउन सोलर। लंबे चावल, चोखी पैदावार, फसल तो होगी शानदार। चोखी पैदावार, फसल तो होगी शानदार। पाकिस्तान में सबसे कामयाब लॉन्ग ग्रेन हाइब्रिड राइस सीड, लंबे चावल, चोखी पैदावार। इसकी प्राइस क्यों नहीं देखी? अरे ये तो अनमोल है, क्योंकि ये मरहबा इस बगौल है। कुछ चीजें होती हैं अनमोल। नाक से अब कैसी जंग जब पास हो नंबर 1 वॉशिंग पाउडर, झाग में दम, धुलाई में नंबर 1। Crown Micro presents solar inverters and powerful lithium batteries compatible with all inverters. Quick 1-hour charge, wall mounting, elegant designs. सिर्फ Crown नहीं, Crown Micro, Pakistan's first international solar brand. कुछ रिश्ते, कुछ साथ, a good forever.
ऐसे कंपेनियन जो हमेशा दिल में ठंडक का एहसास जगाते हैं और वक्त गुजरने के साथ और भी खास हो जाते हैं। बाय भैया। हर नए स्टाइल में पहले से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। नहीं, जिनके होने से हर लम्हा सेलिब्रेशन में बदल जाता है। इसीलिए तो हमें गुड फॉरएवर कंपेनियन कहते हैं। जीएफ से जिद्दत, मयार और पायदारी के 70 साल जो इसे बनाए आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन। जीएफ से बेहतरीन पे यकीन। डायमंड पेंट्स की डायमंड स्टैंडर्ड पट्टी, परफेक्ट बेस फॉर द परफेक्ट फिनिश। और जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो पेंट चलेगा लंबे अरसे तक। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। अंकल सोच लें। हाँ सोच लिया। निपॉन पेंट है, सब महंगा भी नहीं है, जेब पर हल्का, सालों साल चलता। निपॉन पेंट लग गया तो लग गया। निपॉन पेंट, एशिया's नंबर 1 पेंट ब्रांड। जैज़ कैश से लोड कराओ ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी साथ ले जाओ। इस PSL सीजन जैज़ या किसी भी नेटवर्क का लोड या पैकेज सब्सक्राइब करो और पाओ इलेक्ट्रिक कार जीतने का मौका। होगा रिचार्ज मैक्सिमम जितना, चांस होगा हाई उतना। तो फिर ऐसा शानदार इनाम जीतने के लिए जैज़ कैश है ना। अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो। This hourly clock is brought to you by होगा रिचार्ज मैक्सिमम जितना, चांस होगा हाई उतना। अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो। These headline news are brought to you by फॉर्मूला, बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। अफगान बॉर्डर से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। मारे गए खारजियों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। हलाक खारजी गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे। दरअंदाजी नाकाम बनाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते थे। ये जितनी दफा कोशिश करेंगे नाकाम होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया 26 और 27 अप्रैल की शब खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने आने दिया और फिर 3 इतराफ से कार्रवाई की। ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों को पैगाम है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराहम करता है। भारतीय हुकूमत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कलभूषण यादव, भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबूत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान दीवार की तरह खड़ा है। और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारत के इंतहा पसंदों का हमला। पथराव से खिड़कियों के शीशे टूट गए। बरतानवी पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के हामियों ने हाई कमीशन पर जाफरानी रंग फेंक दिया। हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने बताया हमलावर पत्थर साथ लेकर आया था। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे खुसूसी ट्रांसमिशन। एक
माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत। जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, बाल बनाए मजबूत, तुम मजबूत हो। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। चाय बने बस दानेदार, चाय बने बस दानेदार। क्राउन सोलर के पैनल्स, बैटरीज, इन्वर्टर्स लंबे अरसे तक चले और बेहतरीन एफिशिएंसी दे। क्राउन सोलर। Slow melting, smooth coating, long lasting. It could only be Cadbury Dairy Milk. लंबे चावल, चोखी पैदावार, फसल तो होगी शानदार। चोखी पैदावार, फसल तो होगी शानदार। पाकिस्तान में सबसे कामयाब लॉन्ग ग्रेन हाइब्रिड राइस सीड, लंबे चावल, चोखी पैदावार। अस्सलामुअलैकुम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, समझौता एक्सप्रेस, मुंबई हमला, फिर पुलवामा और अब पहलगाम का ड्रामा। ना कोई तहकीक, ना कोई सबूत। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का इल्जाम पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पर इल्जाम के जुनून में भारत अपना होश इस कदर खो बैठता है कि अपना होमवर्क करना ही भूल जाता है। जिस जोड़े की हलाकत दिखाई वो जिंदा निकल आया, हमले का 10 मिनट बाद ही FIR भी कट जाती है और इसी तरह एक के बाद एक भारत के जो झूठ हैं उन पर से पर्दा उठता जा रहा है और अभी तो पता नहीं क्या क्या सामने आएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया। अब से थोड़ी देर कबल वफाकी वजीर इत्तला तथा तारर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा और दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान पाकिस्तान हाइल है। इसी मामले पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद साहब ने। आप साबिक सफीर हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर मौशियात हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सलाउद्दीन भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी ही देर बाद। जरा पहले तैयारी की बात कर लेते हैं। ये जो भारत का जंगी जुनून है और ये जो बड़ा गीदड़ भभकियां जो हैं वो भारत की तरफ से जारी हैं, तो हमारे आर्मी चीफ ने भी बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी कल काकूल एकेडमी में जब गुफ्तगू की और जब खिताब किया तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि हम तैयार हैं। कहते क्या है, सुन लीजिए। Valiant armed forces remain